Yes, Nandini. Yes. Sir, Professor Ramjilal has joined. No, sir, I'm waiting for him to join. Sir, I'm just calling him. here is a. Am I know who is speaking? Professor Ramjilal has joined. Hello. Here is a. Am I know who is speaking? Professor Ramjilal has joined. Hello. Hello. Sir, Ramjila, sir, just joining in 5 minutes. There is a request that my PPT would be shared by Dr. Nandini Sharma. Okay. She's So already. I will make her co-host. Yes, please make her to host. Nandini Sharma is our assistant professor in Amity University. She is my colleague. Okay, sure, She sir. would be sharing my PPT. Please Okay. make her host. Nandini, are you listening? मम्मी ठीक है और भाई बहुत खराब हो गया Yes, I'm listening, sir. Okay, fine.
नंदिनी मैम, एक बार आप अपनी पीपीटी को चेक कर लीजिए कि ओपन हो रही है या नहीं। Please, sir, I'll just check and let you know. श्योर मैम। I am still not getting the option. It's showing me that you joined this meeting in audio only mode. मैम एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे में ऑप्शन नहीं दिखा रहा आपको को होस्ट बनाने का Okay, okay. विद वीडियो एक्सेस। तो मुझे कोई बिगाड़ नहीं आता, भगवान के नाम। पहले कोई गाना सजेस्ट करना है गाने गाने को। I am still not getting any option to share the PPT or even my screen. Hello, Good evening, sir. good evening, sir. I'm audible. Yes, yeah, very much. Okay, thank you very much, sir. मैम एक बार आप वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो एक्सेस ऑन कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो वाला ऑप्शन आप किया मैंने, मेरी फोटो आ रही स्क्रीन पर। नहीं सर, नंदिनी नहीं मैम से नहीं, बोल रहे हैं, नंदिनी नंदिनी मैम। नंदिनी से कह रहे हैं। ठीक है, आशीष जी शुरू करें। Sir, wait for another 5 minutes. My PPT will be shared by Dr. Nandini Sharma, my colleague. तो वो उनका थोड़ा सा होस्ट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। सारी अलग अलग लैपटॉप भी मैंने आशीष जी शुरू करें। चला जाए। सर नंदिनी मैम पीपीटी शेयर करेंगी, पर नंदिनी मैम पीपीटी चेक कर ले। मैंने उनको बोला है कि एक बार वीडियो एक्सेस अपना ऑन कर ले, तो वहां हाँ पर हाँ, फिर उनका ऑप्शन आ जाएगा को होस्ट बनाने का, देन शी विल बी एबल टू शेयर द पीपीटी। ठीक ठीक ठीक। तो हम शुरू करें। आशीष जी, Yes, yes, Nandini. आशीष जी, यस सर, यस सर, यस सर। शुड आई स्टार्ट? हाँ सर 5 मिनट रुक जाइए, हाँ, अभी पूछ लो, नंदिनी पूछ मैम लो, एक बार ओपन कर ले पीपीटी पूछ लो, सर की। ठीक ठीक ठीक, हाँ आप बताइएगा, शुरू करेंगे। हाँ हाँ, श्योर सर। Uh, Mr. Ashish, can I share the PPT with you if you share some email ID or अच्छा, phone number? यस श्योर मैम। वो सब समय गया। Hello. यस मैम। So, how do I share it with you? I don't have your contact details. आई एम ड्रॉपिंग माई मेल आईडी ऑन चैट। Okay. I'll just share the PPT with you then. यस श्योर मैम। Yeah, here I have dropped my mail ID.
Ashish ji, should we start? तो गति तो आई तो थी। सर बस पीपीटी रिसीव हो जाए बस फिर स्टार्ट कर सकते हैं। जब स्टार्ट करना तो हमको सिग्नल हाँ सर दीजिएगा। बस, हाँ बस आशीष जी, मेरे पास जो ये मीटिंग लिंक आया है ना, उसमें सिर्फ व्यू ओनली का ऑप्शन आ रहा है। हमें ना चैट दिख रहा है, ना हमें कोई शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, और हमें कोई ऐसा और सेटिंग में भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ से ओपन हो सके। आई एम ट्राइंग, बट हमें आपकी ईमेल आईडी का भी एक्सेस नहीं मिल रहा है। जफर सर, मैं आपको मेल आईडी भेज दूँ या मैं लिंक भेज दूँ आपको दोबारा से, जिससे मैम ज्वाइन कर लें दोबारा। हेलो यस सर। जी, मिल गई आपको? नहीं सर, एक्चुअली शायद मैम को लिंक प्रॉपर नहीं एक्सेस हो पाया। मैं आपको सर भेज रहा हूँ चैट पे, आप मैम नंदिनी मैम को भेज दीजिए। भेजिए भेजिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग Good राधा। evening, good evening, good evening. हेलो। सर Hello. ये लिंक आप उनको नंदिनी मैम को शेयर कर दीजिए, इससे वो उनको ओके पास सारा एक्सेस आ जाएगा। ओके ओके। एंड आपने मैं किस पे भेजा है वो? सर चैट पे, यहीं पर चैट पे भेजा है, जूम पे ही चैट पे भेजा है। ओके। ये अनु उधर देखना, इससे कैसे ट्रांसफर, चैट से कैसे ट्रांसफर हो सकता है ये? हाँ कैमरा, क्या? इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? ये भी है इन्होंने ये नंदिनी ट्रांसफर करेंगे। लिंक। हम्म, व्हाट्सएप वेब खुला है आपका? व्हाट्सएप वेब खुला है आपका? हाँ व्हाट्सएप खोलो। आप कहाँ वो हो? आप कहाँ चले गए? ये आ जाएगा बस, वेरी गुड, स्टार्ट करो, ओपन करो जी। क्या लिंक का क्या करना है? कुछ नहीं करना, प्लीज गो। तो लिंक हमको नंदिनी को क्यों भेजना है? पीपीटी शेयर करने के लिए प्लीज। ये तो अपने पीपीटी से बुक करिए। Ashish sir, can you share your email ID or phone number verbally? I'll just note it down and share it. या प्लीज। नंदिनी, जी सर। आशीष का है काउंसलर, COUNSELOR जी सर। ASHISH काउंसलर आशीष। @gmail.com। ठीक है सर, I'll just share your PPT. COUNSELOR. हाँ Ashish, everything in small. ASHISH @gmail.com।
Okay. Send, sir. आशीष जी आपको मिल गया होगा आगे हो। हाँ जस्ट अ मिनट सर। आशीष जी शुरू करें? ये सर रिसीव हो गया है मेल। मैं बस पीपीटी ओपन कर रहा हूँ। Yes sir, now we can start. यस Okay, thank you. Hello. Dear participants, I am much overwhelmed with the presence of the distinguished psychologists, and as usually we start Professor N.K. Saksena Memorial Virtual Lecture Series on second Sunday of each month at 6 p.m. Now for this purpose we are here, and this series has been started because Professor Saksena has been patron of our association, Community Psychology Association of India, and for the last 37 years he extended his every cooperation for the development of association. So in his memory, we invite two distinguished psychologists to deliver lecture on a pertinent topic. Today, it is a privilege to have with us Professor S. Zafar Zaidi, who is the Director, Behavioral Sciences, Head, Department of Clinical Psychology, and he is Director in MT University, Lucknow. Before joining the MT University, he was in Central Institute of Psychiatry, Ranchi, and in MT University, he has expanded the department in a very nice manner, and it has a good position in the field of psychology. He will talk on a psychological intervention of invisible disabilities. The second speaker is Dr. Rashmi Mishra from PPN College, Kanpur, who has been
very close to Professor N.K. Saksena. She has been his student, and in every conference we have found her with Professor N.K. Saksena. She has done good work under the guidance of Professor Saksena. She worked on geriatric issues. He worked on parenting styles. Today, she will talk on parenting. So, these are the two speakers today. I welcome the speakers and the audience on behalf of Community Psychology Association of India. And with these words, I request Professor Zaidi to start his lecture. Professor Zaidi. Thank you very much, Professor Ramjilal, and all delegates, dignitaries joining this memorial lecture. First, let me express my gratitude, Shraddhanjali towards my own teacher, Professor N.K. Saksena. Dr. Lal has introduced me in a different ways, but my biggest introduction is that I am the student of Professor N.K. Saksena, and he is my first teacher of psychology. In 1971-73 batch, when I joined PPN College as a UG student, he was HOD, and he remained my guru, and he would always be my guru as per his guidance and support and affection and all these things. And one of the very, very prominent thing which Professor Saksena has, that he used to remember his students by his voice. A very touching experience that when I came back from so many places of working in the government setup and joined Mumbai, I phoned him and my voice he could recognize. That he said, Zaidi, kahan par ho, kahan se bol rahe ho? So this was a great ashirwad which I can get from my teacher. And I am with this reference, I am extremely thankful for Professor Ramji Lal that he has taken me as one of the speaker of this. With this, let me introduce my area, which I would like to speak for another half an hour time. That is psychological intervention in invisible disabilities. Next. Ashish, next. Well, disability is a well-known concept by now, and WHO has given a model for disability, which speaks that impairment may leads to functional limitation, and functional limitation may leads to disabling condition or disability. But here, as per the WHO definition, the impairment is usually visible. One can make it out from the distance that this person is having the amputation of hand, or he cannot walk properly, or he cannot speak properly, and that is why he is showing some limitation in his day-to-day life in functional, and this functional limitation would decide the nature and the severity of disability. Here the main thing is that the impairment is and functional limitation is linked with each other, and impairment is visible. One can see, एक दूर से दिखाई देगा कि ये आदमी में क्या impairment है, क्या अंग इसका किस तरह से amputee है या problem है या weak है, या one can make it out from the distance. Next. But what is the concept of invisible disability? वो disability जो दिखाई ना दे, जिसमें impairment दिखाई ना दे, but इसका functional limitation उसी तरह से हो, and incapable by nature of being seen or not perceptible by vision. One cannot make it out from the vision that this person is having this problem. A physical, mental, or neurological condition that limits a person's movement, sense, or activity that is invisible on the onlooker, because society decides the severity of disability. Unfortunately, that if a person is having certain problems, from a distance one can make it out that this is the disabled person.
no matter what is going on inside the body and inside his feeling and emotions and all these things. Next. So every disability is not visible. This is the biggest message which I want to convey through you and to society and the community, because this is community psychology. Every disability is not always visible. Not every disability is visible. And next, now the how to differentiate impairment visible and invisible. Impairment is visible, impairment is invisible. जो दिखता नहीं, पर्स impact क्या होता है इसका? Person with invisible disability are not noticed as person with special need and hence ignored. Everybody would make it out this person is of special need, he requires support, he requires hands and he requires hand holding and all these things. But in that case, if the impairment is not visible, he is likely to be ignored. Nobody give him a status of a special person. Limitation is visible, limitation is, but in both the conditions, if you thoroughly analyze his performance, you will notice that despite having two strong legs, why is not walking fast? Why is not running as others of his age? Why is not standing? Why is not moving as per the need? Why is taking so much time? Why he needs support to walk? And the third point, impairment is visible, hence concern and support is available. फर्स्ट कंडीशन में जो विजिबल डिसेबिलिटी होती है, चूंकि उसमें everything is perceptible, every support is given. But here in this case, the person is not suspecting, not being given any support, and hence he is of a disadvantaged condition. A very simple example that in the sub samaj, if a person is climbing the bus and without a leg, everybody will offer him a bench or a seat and all this. But if he is having both the legs, but there is myopathy, when the legs muscles are not strong enough to hold him for a longer time, he will not get any support. Nobody will offer him his own seat because it is not visible. This is a very basic thing between visible disability and invisible disability. Next. Ashiji, next. Now, prevalence. Unfortunately, in India, we do not have any survey. Even the census, recently, the last census, we have added the census counting of heads of the person with disabilities. And that too, the obvious disability which was there are covered. But there are many number of persons who are left out to count. And so the size of problem is not known, particularly in Indian scenario. But in USA and UK and all these things, they keep on doing the invisible disability prevalence survey, and it is varying from 13% to 96%, 94%, depending upon the different nature of disability. And every 1% out of 5 is having invisible disability, and they are not counted in our system. About 10% of population globally have a medical condition that could be considered as invisible disability. In an average, what is the main message? That about 10% of our population is having invisible disability, but it is considered not as a limiting problem. About 25% have some activity limitations ranging from mild to severe and moderate, and that may create an impact of quality of life. Next. Conditions that are invisible disability but covered under RPWD Act. This Right of Person with Disability Act 2016 has given some coverage of these invisible disabilities,
like low vision, narrow field of vision, hard of hearing, mental illness, autism spectrum disorder, specific learning disability, speech and language disability, multiple sclerosis, hardening of the tissues, thalassemia, hemophilia, and sickle cell disease. These are the blood conditions which are leading to limitation and making a person disadvantaged. The conditions that are invisible and not covered under any act. Now you see, my focus is on this, that the condition which is otherwise limiting a person's activity but not covered under any act, that is chronic pain, fibromyalgia, chronic fatigue and syndrome. There are conditions when the person, because of blood reasons or maybe because of many other conditions, when the person is not related to the aging, but the aging is not considered to be as invisible disability, mind it. When the person is of a full grown person with the working conditions, working age group, but he is having some limitation which is not visible and her performance is impaired because of this. Chronic fatigue syndrome, traumatic brain injury, Crohn's disease, diabetes mellitus. Many diabetic conditions may lead to invisible disabilities. Post-traumatic stress disorder, PTSD. Nowadays we are talking about this, but as a psychiatric condition and not as a disabling condition. Next. Common psychological manifestation in invisible disability. So what is the outcome of it? What is psychological reaction to this? The number one, living with disability or medical condition that are not perceptible by simply looking at them and maintain productivity and good interpersonal relations. The stress is that since he is not considered as a disabled person, his employer, his family, his society is not accepting and not giving any allowance to any relaxation to him. And he has to maintain his work productivity. He has to maintain his interpersonal relation, his social relations. And for that, he is finding himself more stressed and more disadvantaged. Number two, few can manage their condition and still participate in work, hobbies, and social activities without serious adjustment issues, manifestation of symptoms. There are still many people who, despite having this invisible disability of moderate to severe nature, are managing and can be performed continuously well and be achieve the targets. Many others may struggle with day-to-day tasks, including being able to carry out their economic activities and social obligations. But many of them cannot because of this condition, and it becomes very difficult for them to earn livelihood as well as to perform even the very basic social obligations. Next. Remains under constant pressures to prove themselves without any allowance to his invisible impairment. The proving to themselves, if a person is employed, for him the target fixed is as good as high as the person who is normal, so-called physically, but he is not in a position to drive, he is not in position to travel, he is not in position to interact, to achieve the target, but he has to maintain, and this he has to prove himself as fit enough as anybody else is. People across the full range of his invisible disability often are suspected to faking and exaggerating of their condition, but this simply may not be the case. The very emotional setback for those persons who are who are considered to be a faking, a makar, a nalayak, kamchor, or you may use any other word to express, to condemn his performance without realizing that why he is not performing, without giving any thought to his, any allowance to his limitations.
And this is making him that I am not been able to do this thing. I am not able to concentrate much because of my vision problem or because my spine problem. I cannot sit for a longer period. I have to have some 5 minutes pause in between. So my employers, my colleagues, my juniors are considering me as non-competent, incompetent. But it is not so. My condition is such that I cannot sit longer period than this. Invisible disability can have a profound effect on the person's ability to successful navigating day-to-day activities. It's almost the same. Next. Challenges at a glance. What are the challenges with what these disabled persons are facing? Fear of discrimination or bias. Even with progressive policies in place, social stigma persists around disability. And they would not like to declare themselves as a disabled because of the fear of that it would be stigmatized. He would be stigmatized. There is a fear, though there is a strong policy decision that nobody would be biased or doing anything which may not be of the interest of the person, but still people would not like to be. My personal experience of working in the disability sector for years together, if sometime we have to offer him a person to be a categorized certified case so that he may get some advantage, some relax. He refused. He said, no, I would not like to be stigmatized, would not like to be stamped as a disabled person. Let me try once again. Let me try for some time more. Lack of understanding from teachers, colleagues, employees, and near and dear ones. Teachers particularly are not fully aware of their student, and his limitations are considered to be either because of lack of interest, lack of commitment, lack of sincerity, without realizing whether his vision is strong enough, good enough to see the read and to write. Some time back, I had visited one school, and I simply did a very simple 6-foot test. I made few students stand before the notice board and read. Believe me that out of 7, 8 cases, students 3, 4 could not read even after 2 feet distance. And they have been getting banging from the teachers as well as from the parents that ये काम नहीं करके लाता, कॉपी उससे उतारता नहीं, homework नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, without realizing whether he is in a position to see it or not. When I asked child that why didn't you report that you are not seeing it, so he said that हमें लगा कि सब बच्चे ऐसे ही देखते होंगे. He himself did not realize that this vision problem is a problem. He thought that every child must be seeing like this only. Absence of accommodation, acceptance, and support. And if you ask anything, अरे यार ये तो ऐसा ही है, मक्कार है, काम नहीं करता. So there is no accommodation, there is no support extended to this type of person. Next. Model of disability irrespective of its visibility. Now come to the basic thing that what are the models on which we are working, we should work, whether the disability is visible or invisible. Disability by their impairment or difference. These impairment or differences should be fixed or changed by medical and other treatment. Medical model speaks only by the treatment, that if there is a problem, you either correct by surgery or by physiotherapy or anything, and that's all. That responsibility ends there. The medical model looks at what is wrong with the person and not what the person needs. What is wrong, that has to be rectified. What are his other needs? What are his social needs? What are his emotional support required? That is the secondary to the medical model, purely medical model. It creates low expectation and leads to the people losing independence, choice, and control of their own life. And with the result, whatever things are left out, whatever things are given to them, he has to live with that limited things without expressing his personal life preferences, his desire to work, or his quality of life. What is
psychosocial model is just reverse to this. Disability is caused by the way society is organized rather than by the person's impairment or difference. If society is providing a ramp as simple as this, a person who cannot otherwise climb your room, climb your veranda, would be able to climb. So within a few minutes back, he was disabled because there was no ramp, no support. Now the ramp is provided. He can reach to the any level of stairs. It looks at where the removing barriers and restricted life choice for disabled people, the same thing. When barriers are removed, disabled people can be independent and equal in society with choice and control over their own life. When the support is barriers is removed, physical barrier, psychological barriers, the person would have its own choice that how and where and what to do. Disabled people develop a social model of disability because the traditional medical model did not explain their personal experience of disability or help to develop more inclusive way of living. They would like to be inclusive, but unfortunately, because of the external medical reasons or external structural reasons, they are not inclusive and they are segregated, they are marginalized. So they would love to be inclusive, whether it is visible or invisible, but unfortunately, it is not been done to the great extent. Barrier are not just physical attitude found in society based a prejudice or a stereotype also disabled people from having equal opportunity to a part of the society. And this barrier is not only the physical barrier, it is our attitude which is more stronger barrier. Our prejudice for the person with disability, whether it's visible or invisible, that is creating more hurdle to their quality of life and their flourish and their progression. Next. Moral model. It is unique for an Indian setup. In the moral model, disability is seen as having meaning about a person's or family character, deed, thoughts, or karma. जैसा करेगा वैसा भरेगा. This moral model that that person with disability is considered to be the outcome of their own deed, their own thought, their own activity. Maybe for some reasons, if the person is careless and he is not following the traffic rules, and if he met with an accident and became disabled, definitely it was because of his carelessness, but not if a child is born without eyes, or when the child is born without ear, or he is losing his one particular strength. It is not the karma, it is something more than that, and one cannot be considered as, cannot be demoralized on the basis of this characters, family's character, deed, thoughts, and karma. It's not only your character, it's not only the victim. Even people are, the society are labeling that this is the outcome of the misdeed of his father, parents, and grandfather, and everybody. To heredity, it is transferred. So this is not the correct way, but this is moral model. It speaks about how the disability is taken place. From this perspective, disability can carry stigma, shame, and blame, particularly if the disability is seen as a mark of wrongdoing. Alternatively, disability can be seen as a sign of honor, faith, or strength. For example, someone who is religious may believe the family members are chosen to have a disability due to God faith in them. It is reverse to that also. Sometimes reaction formation in terms of defense mechanisms, that some people take, if there is any disadvantaged condition, that God has selected us for the trial, for this examination, this pariksha, and we are the chosen one. And this is nothing but the defense mechanism to great extent. But it is not considered as the disability in the real shape, real way, real sense. Disability either be considered as a sin or as a blessings, not as the condition which can be handled and which can be managed and rehabilitated. Disability may also be perceived as a positive reminder of having survived of life challenges. In some of the cases, disability is considered to be the outcome of
the challenges, success or facing the challenges or failure in facing the everyday life challenges. The moral model is very prevalent worldwide and is often depicted in the media. Though it is prevalent worldwide, but unfortunately it is more prevalent in our system, and it is being promoted by media by different ways. Next. So what are the psychosocial intervention, which is the topic of what are the solution, what we should do? Like every system, like every intervention, we should start with psychoeducation. I'll be explaining it in detail. Number two, assessment, counseling, psychosocial rehabilitation, assertive cognitive treatment, vocational rehabilitation, disseminate of social security scheme. Now I'll handle one by one. Next. What is psychoeducation? Psychoeducation is defined as an intervention with systematic, structured, and didactic knowledge transfer from an illness and its treatment, integrating emotional and motivational aspects to enable patients to cope with the illness and to improve the treatment adherence and its efficacy. In short, psychoeducation is an attempt to explain the real scientific nature of problem, whether it is a disease or a condition, and what are the psychological consequences and how to handle, how to manage. And this is the very, very first aid which we can offer to any of our client, whether he is a psychiatrically ill or he is a disabled person. Process aimed at the helping to learn the substitute more adaptive pattern for maladaptive ones. And this also helps the individual to follow the rather more adaptive than the maladaptive pattern, how to handle. Because you have only two ways. If there is a crisis, if there is stress, you have only two ways, either fight or fly. Fly is not going to help you out. Fighting and how to fight with the stress, that is the solution. It's target individual and significant others. And it's not only the person who is having this problem, but the person's significant others, means caregivers, the relatives, family members, because we in India, we live in the vertical family. We are considered ourselves and equally important and influencing with as our seniors, our parents, and as well as our junior, our children. So we are living in the vertical ways. And this vertical living style has to be handled by, and everyone who is influencing the individual should be psychologically educated. Next. Counseling to empower the individuals with invisible disability. Disability counseling can provide support and assistance to disabled people and their parents, family, friends, and caregivers. Living for persons with disability can indeed be a long and arduous journey, both mentally and physically. It can be equally challenging for those who live with such people or even care for disabled persons. Sole aims of disability counseling is to foster a safe, comfortable, and supporting personal space to discuss concern and widest fear among persons with disability. So all these things would help a person, an individual, to be more proactive, the family member more proactive, because many a time he has to live in this condition for a longer period, and the fear among persons with disability. All and these things would help a person, an So- individual to be from where this echo has started coming, Ashish? Sir, I have muted the person. Okay. And the caregivers have to live with this condition. So it has to be empowering both the person who is having this problem and the person who is taking care of this problem. Next. Psychosocial rehabilitation support. Psychosocial rehabilitation is the process that facilitates opportunity for persons with chronic conditions to reach their optimal level of independence, functioning society, and improving their quality of life. Psychosocial rehabilitation is aimed as
improving the quality of life. And this quality of life it has been proved that cannot be achieved only by financial assistance. It has to be by the acceptance, sharing, caring, and many social support systems. So it has to be, for quality of life has to be improved, not only by financial support, by the schemes, but the acceptance, accommodation of individual by the integration in the main society. Impairment, functional limitation, adapted model, stress, voluntary coping competence model. So one has to be offering the support model to minimize the functional limitations. Next. Assertive community treatment. Assertive community treatment is an evidence-based practice that offers treatment, rehabilitation, and community integration services to the individual. It is community-based. One has to be treated within the community, CBR, community-based rehabilitation. One has to be supported within the community, within the resource available in community, and not only by institutional care. ACT use a person-centered recovery-based approach to care, especially designed to meet the need of community dwelling persons of high risk and further deviations or dejections. And here this community-based assertive treatment community procedures also aims to prevent the further dejection, further dislocation, further rejection of the individual within the society, within the community. So you have to educate your society members to be more integrated, more inclusive. Next. Next. And ultimately the vocational rehabilitation, which is a very, very important, that this person with invisible disability are likely to be economically disadvantaged because of his continuous physical conditions, chronic pain, chronic fatigue, blood problems, muscles problems, bone problems, vision problems. So we have to find out that we have to make them economically viable by different ways. Now time is less, so I cannot go in detail. There is 3 stages. That one is the assessment of residual capacity, the employment choice, suitability, and the finding of suitable placement. Next. 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 Dissemination of social security scheme, that we must share the individual, that what are the social security schemes, what are the government schemes, what are other NGOs working into this area, and we have to answer 3 Ws. What is the scheme, where it is available, and when it is the right time to approach. And with this, I think we would be able to handle our persons with invisible disability. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for this lecture. You have covered a vast area of the invisible disabilities. Actually, we are knowing only the visible disabilities, and we had talking more about the visible disabilities. But we find that this invisible disability is also very important because it is completely a neglected phase of the children, of the family. So you have given a good direction to the people, and we should concentrate also on the invisible disabilities. And really, it's a homage to your teacher, Saksena, and I am very much thankful to you
that you spare time for delivering a lecture. Thank you, sir. Thank you very much. It's my honor. I'll request you to take this thankfulness back, because it is the minimum which a student can do for his teacher, which I have done it. He is, as I told you, that he is my first teacher, the first lesson of psychology, which has become my Nice, career, sir. which has You are become, fortunate enough. which has become my bread and butter and career and position in society, is created by Dr. N.K. Saksena and many other teachers. I remember that with him, Dr. B.B.L. Saksena was there in PPN College, Dr. Chitre was there, and Dr. K.D. Kapoor was there. And I'm highly obliged to all of them. And I'm seeing Dr. Madhurima Pradhan also. Regards to you, ma'am. Sorry, sir, I joined late due to some technical glitches, miss some initial part, but really it was a very enlightening lecture. Earlier I was thinking what may be the invisible disability, but you clarified very elaboratively the causes and the consequences. Frequently we see there are many people who are not able to perform in life, in a family or some other reason, and we blame in the workplace कि वही काम चोर है ये चाहता नहीं. But with the humanitarian ground that you elaborated very well, it's very enlightening lecture. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Over Any to you, sir. participant, if you have any comments, recommendations, and observations? Ashish, thank you very much for sharing my PPT. My pleasure, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Now we are proceeding for the next lecture. And I think Dr. Rashmi Mishra is here. Yes, He sir. is with us. Yes, she is here. And she will deliver lecture on parenting. And she has been very close to Professor N.K. Saksena. And I think she had treasured memories with Professor Saksena. And she had chosen a topic, parenting, and Professor Saksena always stressed on parenting, social emotional learning, and all these items were his favorite topics. And Dr. Rashmi Mishra, they have just, they are going with the same legacy. So Dr. Rashmi Mishra is professor in PPN College, Kanpur. So I request her to please start her lecture. Dr. Rashmi Mishra. सबसे पहले तो हम रामजी लाल सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस वर्चुअल लेक्चर सीरीज का एक हिस्सा बनाया. और दूसरी बात यह है कि इस एसोसिएशन से हम काफी लंबे समय से 92 से जुड़े हुए हैं. जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां से हमारा जुड़ाव है. तो ये जो एसोसिएशन है इससे एक लॉन्ग टर्म से हम जुड़े हैं. तो और हमारा जो वर्क रहा है वो स्वयं पेरेंटिंग पर था. तो इस पे हम काफी कुछ सोचा करते हैं. जब हम पढ़ा करते थे तो एक किताब हुआ करती थी, फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, और उसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक 2 चैप्टर हुआ करते थे. उन्होंने हमें इतना प्रभावित किया कि सोशल के बैकग्राउंड में हम जब भी किसी के बारे में या सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में या पेरेंटिंग के बारे में सोचते थे तो हमारे दिमाग में वही सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते थे.
और उसमें से दो चीजें थी कि जब सोशलाइजेशन होता है तो जो बच्चा होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में दो तरह से डिपेंडेंट होता है। पहला होता है इफेक्ट डिपेंडेंस और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन डिपेंडेंस। तो आज हम ये देख रहे हैं कि उतने साल से लगा करके आज तक भी जो एक चेंज आया है पेरेंटिंग प्रोसेस में, और जो सोसाइटी में, जो एक फैमिली में भी जो चेंज आया है, उसके आधार पर हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है। और हम जिन चीजों पे पहले हमने वॉम्सा थ्योरी पे काम किया था, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन पे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चा इफेक्ट डिपेंडेंस तो आज भी रखता है, लेकिन इंफॉर्मेशन डिपेंडेंस जो है वो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो चुकी है। कॉग्निटिव लेवल पर बच्चा सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीखता है, ज्यादातर वो पेरेंट से कुछ भी नहीं सीखता। और उसमें क्या होता है कि जो एक पार्ट और एसोसिएशन कॉग्निटिव लेवल पर था वो लैकिंग हो गया है। इफेक्ट डिपेंडेंस का पार्ट तो आज भी रोल प्ले करता है बहुत सारी वैल्यू सिस्टम को लर्न कराने में, लेकिन इंफॉर्मेशन डिपेंडेंस जो है वो काफी कम हो गई है। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो हमारे बच्चों में इमोशंस का मैनेजमेंट खराब कर रहा है, और उसमें जो पुरानी पेरेंटिंग टेक्निक्स थी वो अब उतनी कारगर नहीं हो रही। तो चीजें वही हैं, बस उनको थोड़ा सा देखने का और उसको बच्चों के साथ डील करने का थोड़ा सा नजरिया आज के प्लेटफॉर्म के हिसाब से होना चाहिए। तभी हम बच्चों को प्रॉपरली ट्रेन कर पाएंगे अपने आप को समाज में प्रूफ करने के लिए। तो टुडेज माय टॉपिक इज इमोशनल कोचिंग थ्रू माइंडफुल पेरेंटिंग। 50% जो हमारी हैप्पीनेस है वो डिटरमिन होती है हमारे जेनेटिक्स से, और 40% इंटरनल फैक्टर से, एंड 10% जो डिटरमिन होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर से डिटरमिन होती है। तो इस तरह से जो भी हमारा डिटर्मिनेशन है हैप्पीनेस का, वो इस तरह से होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आप डेवलपमेंटल स्टेजेस में उसकी बहुत सारी जो ईगो डेवलपमेंट जो है, जो उसकी पर्सनालिटी को बाद में भी शेप करता है, वो ईगो डेवलपमेंट के अनुसार, जैसा उसका ईगो डेवलप होगा उसी के अनुसार ये पता चलेगा कि वो किस तरह से फील कर रहा है, और जैसा ईगो डेवलपमेंट होगा उसी के अनुसार हमारे इमोशंस डेवलप होंगे। तो जो एक फंडामेंटल एक व्यक्ति की जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो ईगो डेवलपमेंट से प्रभावित होती है, और ईगो डेवलपमेंट से उसका सेल्फ आइडेंटिटी जो कि थ्रू आउट लाइफ बनती है वो प्रभावित होती है। तो आइडेंटिटी के अंतर्गत हमारी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एज है, रिलीजन है, ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीजें इससे आती हैं। और ये जो अटैचमेंट्स हैं हमारी आइडेंटिटी के प्रति, ये हमारे बिलीव्स को डेवलप करते हैं, और जो बिलीव्स हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं जिनके आधार पर हम इमोशंस को फील करते हैं। होता क्या है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक ईगो का ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को अपना पोजीशन मान करके जब हैंडल करते हैं तो वहां पर बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इमोशंस जो हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं। Emotions are not obstacle to be managed or suppressed. They are essential signal wired into our biology for survival, communication, and bonding. Understanding the neuroscience behind emotional connection transforms how we view our children's difficult moment, reframing them as opportunity rather than problem to be solved. अब इमोशंस जो होते हैं एक तो वो नेचुरल हैं और वो नेसेसरी भी हैं। अगर हमारे अंदर इमोशनल
ब्लॉकिंग आ जाती है तो बहुत प्रकार की मेंटल हेल्थ इश्यूज उत्पन्न हो जाते हैं। एवरी इमोशन सर्व्स ए पर्पस। फियर कीप्स अस सेफ। एंगर signals a boundary has been crossed. Sadness helps us process loss. Joy strengthens bonds. When we dismiss or suppress a child emotion, we are not protecting them, we are teaching them that their internal experience is unreliable or unworthy of attention. This undermines their ability to trust themselves and other throughout life. तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हर इमोशन का एक रोल होता है व्यक्ति के जीवन में। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन गॉटमैन, उन्होंने ये बताया है कि पेरेंट्स अगर प्रैक्टिस करें इमोशन पेरेंट्स अगर प्रैक्टिस करें इमोशन कोचिंग की तो वो सेल्फ soothe more quickly, experience fewer behavioral conflict, demonstrate stronger immune function, and slow better academic performance. These children also develop deeper friendship and less quickly to engage in risky behavior during adolescence. So, some types of parenting styles are generally performed are used by parents for handling the children. Now I am discussing the dismissing parent. Dismissing parent are just get over it. You are fine. You are fine. Just get over it. These are dismissing parents. And disapproving parent, stop crying. I shall give you something to cry about. Big boy, don't cry. मतलब they are disapproving parents. The laissez-faire are, it is okay. You can do whatever you want. All things is going on the part of the child's part. They are not taking any pains for handling the problem of the child. And the emotion coach kind of parents are, I can see you are really upset. Tell me what happened. They involve the child's problem and say that I can acknowledge that you are upset and tell me what is happened. What are your problems? Please discuss me. And now emotion coaching through mindful parenting is an approach in which parents use mindfulness, empathy, and emotional awareness to help children recognize, understand, express, and regulate their emotion. Rather than dismissing or punishing emotion, parents view emotional moment as opportunity to teach coping skills and strengthening the parent-child relationship. This approach combines the principle of mindful parenting, being present. Mindful parenting is being present, non-judgmental, and compensate with emotional coaching, guiding children to understand and manage emotions. Now, emotion coaching is a parenting style in which parents acknowledge children's emotion, help them label their feelings, validate their experience, and guide them toward healthy way of coping. According to psychologists such as John Gottman, emotion coaching helps children develop emotional intelligence, resilience, and healthy relationship. Now I am discussing the 5 steps of emotion coaching, how we can inculcate in the child. Be aware of child's emotion. Parents notice both verbal and non-verbal emotional cues.
And second step is view emotion as opportunity. Instead of ignoring difficult emotion, parents see them as opportunity to teach emotional skills. Third step is listen with empathy. Parents give their full attention without criticizing or interrupting. Example, I can see you are upset. I am here to listen you. Listen with empathy. Number 4 is help children name their feeling. Parent teach children emotional vocabulary. Example, angry, sad, excited, frustrated, nervous, disappointed. Naming emotion help children understand and regulate them. And fifth one is set limit and solve problem together. Parents validate emotions while guiding appropriate behavior. It is okay to angry, but it is not okay to hit someone. Let find another way to express your anger. These are 5 steps through which number 1 is awareness of emotion. Number 2, views emotion as opportunity. Number 3, listen with empathy. Number 4, help children name their feeling. And number 5 step is step limits and solve problem together. Now, first step is related with awareness and connection. Become aware of the emotion and recognize the movement as an opportunity. And second step is acceptance and labeling. Acceptance and labeling, a parent try to accept what is happening and help them name the feelings. So in this way, he can accept and label the emotion. Next one is setting limits and problem solving. Now distinguish feelings from action, and they try. This is the final step of emotion coaching process. He can distinguish feelings from action. In this way, he can or she can teach with emotional coaching process. Now, transforming daily routine. Emotion coaching is not a technique reserved for crisis moment. It is a way of being that can be woven into the fabric of everyday family life. The most powerful emotional teaching happens not during planned conversation, but in the small repeated interaction that make a typical day. By bringing intentionally to routine movement, parents can deepen connection and build emotional resilience incrementally. इमोशनल resilience भी डेवलप होता है इमोशनल कोचिंग से, इमोशन कोचिंग से. अब इंटेंशनल 1-on-1 टाइम, एक ही समय में एक चीज को फोकस करना. यूज ट्रांजिशन माइंडफुली, जो ट्रांजिशंस हैं उनको माइंडफुली यूज करा जाए. मॉडल काम कम्युनिकेशन, मॉडल कम्युनिकेशन के आधार पर ही वर्क किया जाए. क्रिएट इमोशनल चेक इन रिचुअल्स, जो रिचुअल्स हैं उनमें इमोशनल चेक होना चाहिए, क्योंकि हर चीज में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां. नाउ आई एम कमिंग द नेक्स्ट पार्ट, that what is mindful parenting. Mindful parenting is the practice of paying full attention to the child with openness, acceptance, and compassion. It encourages parents to respond thoughtfully instead of reacting impulsively. Core principles of mindful parenting are being fully present, listen without judgment, emotional awareness, self-regulation, compassion, and empathy. Mindful parenting can be done
across different developmental stages. Mindful parenting is the practice of bringing present moment awareness, empathy, emotional regulation, and non-judgmental acceptance into parent-child interaction. Since children physical, cognitive, emotional, and social needs change as they grow, mindful parenting must also adopt to each developmental process by responding thoughtfully rather than reacting impulsively. Parents can foster secure attachment, resilience, and healthy psychological development throughout childhood to adolescent or adulthood. Main objective of the mindful parenting is promote healthy emotional development, strengthen parent-child relationship, encourage secure attachment, foster self-regulation and resilience, reduce parental stress and family conflicts, support children overall well-being. Core principle of mindful parenting are listening with full attention, non-judgmental acceptance, emotional awareness of self and child, self-regulation in parenting, compassion on oneself and the child. Now I am discussing how mindful parenting can play a role across the different developmental stages. Number one, infancy, 0 to 2 years. Developmental characteristics are rapid brain development, information of secure attachment, dependence on caregivers, communication through crying and facial expression. In this stage, mindful parenting can be respond promptly and sensitively to the baby's need, practice skin to skin contact and eye contact, maintain calm during crying episodes, observe the baby's cues without frustration, establish predictable routines, and if we use these mindful parenting technique in this stage, there may be some benefits also. Secure attachment will be developed, emotional security a child will feel, healthy brain development a child will feel, reduce parental anxiety. And next stage is early childhood, 3 to 6 years. In this stage, developmental characteristics are language develops rapidly, emotional expression increases, curiosity and imagination expanded, frequent tantrum and emotional outburst. These are the characteristics, developmental characteristic of these stage. And in this stage, we can use mindful parenting strategy like validate children's emotions, use gentle guidance rather than punishment, practice mindful listening, encourage emotional leveling, use play as learning opportunity. By using these mindful parenting strategies, if we use in this stage, there are some benefits of these mindful strategies. A child will develop better emotional regulation, increase confidence, improve communication, and positive behavior. And now I'm coming in next stage, middle childhood stage, which is 7 to 11 years. In this stage, there are developmental characteristics like logical thinking develops, peer relationship becomes important, growing independence, academic demands increases. These are the developmental characteristics. And mindful parenting can be used, encourage open conversation. Parents should encourage open conversation. Teach problem solving skill. One should
teach how you can solve your problem. Support academic effort without excessive pressure. Don't give pressure. Always try to support in academic efforts and practice gratitude together. One should pay gratitude. It is also a very powerful way. If we use it, our mental health will be more better. Balance digital technology with family interaction. It is nowadays digital technology uses is very common between parents and child also. So one should create a kind of balance between family interaction and digital technology. Otherwise, it will leads in a single side towards the child, and emotions will be lacking and interactions will be lacking if we not establish balance between technology and family interaction. Now, if we use in this stage all these mindful parenting strategies, then what will be the benefit? A child will develop better self-esteem. Self-esteem is very important for identity development. And next one is strong resilience, because he can handle their emotions easily. Improve decision making. A child will develop a power to take decisions by own self. And a strong parent-child trust will be also built up if we use these mindful strategies. Next one is stage is adolescent, 12 to 19 years, which we can teenage. Developmental characteristics can be identity formation, emotional fluctuation, desire for independence, increased peer influence, greater use of social media and digital technology. It is very much common in adolescent stage. And we can use mindful parenting strategies. Listen without immediate judgment. Don't take any judgment. Listen what is child is saying, expressing. Respect privacy while maintaining appropriate supervision. अगर आप किसी के सुपरवाइज करना चाहते हैं, किसी को जानना चाहते हैं, तो उसकी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करिए. अगर आप प्राइवेसी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो इस स्टेज में बच्चा अपनी बातों को आपसे शेयर ही नहीं करेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकरेज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. वन शुड इनकरेज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. डोंट गिव स्पून फीडिंग. स्पून फीडिंग अगर आप करा रहे हैं तो ओवर प्रोटेक्शन होगा, और ओवर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो develops a handicapped child, mentally handicapped child. So never try to give independent decision making. Always encourage independent decision making. Discuss digital citizenship and responsible AI use. AI बच्चा यूज करता है हर चीज में. एआई आजकल वो हर बात को एआई से ही पूछ करके कर रहा है. तो उसे ये बताइए कि एआई को आप कहाँ यूज करें और कैसे का यूज करें और कितना यूज करें. हर बात एआई से पूछना भी ठीक नहीं है. तो इसको भी आप डिस्कस करें, बच्चे को बताएं कि क्या और कितना यूज करना है. नेक्स्ट है मॉडल हेल्दी इमोशनल रेगुलेशन. अब इमोशनल रेगुलेशन बहुत जरूरी है. बच्चा हेल्दी इमोशन रेगुलेशन को डेवलप करे, इस बात का प्रयास करिए. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिस माइंडफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. बच्चे को माइंडफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की प्रैक्टिस करानी चाहिए. वो जो भी समस्या है उसमें प्रेजेंट टाइम में फोकस करे और अपने जो
कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करें। अगर पेरेंट्स इस टाइप की माइंडफुल पेरेंटिंग टेक्निक को यूज करते हैं तो इस स्टेज में उसके अंदर क्या क्या इनकलकेट होगा, अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्ट्रेटजी? बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों में, वो डेवलप होगा। रिड्यूस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। इंक्रीज ट्रस्ट, बच्चा विश्वास करना सीखेगा, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी समस्याएं इसीलिए होती हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स पे विश्वास नहीं करता और दूसरों से शेयर करता है या नहीं करता है, दोनों स्थितियां खराब है। हेल्दियर डिसीजन मेकिंग डेवलप होगा और इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग, इससे उसकी जो मेंटल वेलबींग है वो अच्छी हो जाएगी। एंड लास्ट स्टेज इज एडल्टहुड 18 to 25, दीज आर ओनली द डेवलपमेंटल स्टेजेस। उसके बाद तो डिक्लाइनिंग पीरियड शुरू होता है। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज इज 18 to 25, greater independence. Independence is very important. Career and higher education decisions लेने होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप, मैरिज है या और भी जो संबंध है वो डेवलप होते हैं इस एज में। फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है एडल्ट्स पर। तो इस स्टेज में कौन कौन सी माइंडफुल पेरेंटिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए? शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग टू मेंटरिंग। डायरेक्टिंग नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट करते हुए आप उसका मेंटर बनिए, तब वो चीजों को अच्छे से हैंडल करना सीखेगा। रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी एंड पर्सनल चॉइसेस, जो भी वो करना चाह रहा है उसको आप ऑटोनॉमसली एफर्ट करने दीजिए और उसकी पर्सनल चॉइसेस को भी सम्मान दीजिए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट विदाउट कंट्रोलिंग डिसीजंस, जो इमोशनल सपोर्ट है वो दीजिए और उसके जो डिसीजंस हैं उन पे कंट्रोल मत करिए। इनकरेज रिजिलियंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिजिलियंस को इनकरेज करिए और सेल्फ रिफ्लेक्शन को बताइए। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हेल्दी रिलेशन के लिए। ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता तो बहुत सारी चीजें हम छूट जाती हैं हमसे। तो बेनिफिट्स इसके ये हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, जो भी उसके जीवन में रिलेशन होते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं। दूसरा ये है कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हेल्दी इंडिपेंडेंस होता है और बेटर कोपिंग स्किल्स डेवलप होती है। तो these are the 5 stages in which a person develop, a parents can play mindful parenting technique for their child, and these are the benefits of these techniques which inculcate in his or her personality. Now I am discussing about the supporting developmental stages. क्या होता है जब हम माइंडफुल पेरेंटिंग टेक्निक को यूज करते हैं? तो ये एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है, रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है दैट अडॉप्ट टू ईच स्टेज ऑफ चाइल्ड जर्नी। ये हर स्टेज पे हम इसको यूज कर सकते हैं और जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर है उनमें को रेगुलेशन होता है और जो केयर गिवर्स हैं वो उसके जो इमोशंस हैं उनको मैनेज करने में ये सहायक होता है। दूसरी बात ये है कि उसको वार्मथ मिलता है, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस होती है जिससे वो एक सिक्योर टाइप का अटैचमेंट फील करता है और इमोशनल रेगुलेशन पूरी लाइफ में उसका बेटर डेवलप हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में इसका ये परिणाम। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल एज में माइंडफुल पेरेंटिंग शिफ्ट टुवर्ड फॉस्टरिंग ऑटोनॉमी विद इन सेफ बाउंड्री। वो ऑटोनॉमी को सेफ
बाउंड्री के रूप में परसीव करता है। और इससे टाइम टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसन अबाउट फ्रेंड्स, स्कूल प्रेशर एंड इमर्जिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसमें वो बहुत सारे जो उसके इंटरोगेशंस हैं वो नहीं आते हैं, और वो बहुत सारी चीजों के बारे में खुद ही से इंटरप्रेट कर लेता है चीजें। एंड थर्ड वन इज एडोलेसेंट। एडोलेसेंट इज द टीन एज where identity formation, peer pressure, and independence, all these things require. And mindful parenting during adolescence means holding space without control. आप बच्चे को स्पेस दीजिए। एक हमने जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक किताब हमने पढ़ी थी, आसुबेल की एक किताब थी, उसका टाइटल ही था कि माई पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड मी, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे नहीं समझते। तो बच्चा, क्योंकि बच्चा अपने को बड़ा समझ रहा है, पेरेंट्स अभी भी उसको छोटा समझ रहे हैं। तो वो किताब बहुत ही अच्छी किताब है आसुबेल की, जिसमें लिखा है कि माई पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड मी। तो एडोलेसेंट मीन्स होल्डिंग स्पेस विदाउट कंट्रोलिंग। आप उसे कंट्रोल नहीं करिए, लेकिन उसको स्पेस दीजिए, और स्पेस के साथ में उसकी समस्याओं को सुनिए और उसे समझने का प्रयास या उसे सुलझाने में उसकी मदद करिए। नेक्स्ट स्टेज जो हमने बताई थी वो एडल्ट हुड की थी। और एडल्टहुड में जरूरी यह है कि जो नए नए रिलेशंस बनते हैं, कैरियर डिसीजन मेकिंग है, रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, लाइफ ट्रांजिशन है, तो इसमें प्रेजेंस होना चाहिए। उसकी उसके अंदर जो क्वालिटीज डेवलप होंगी वो प्रेजेंस की होंगी, नॉन जजमेंटल होगा, और ट्रस्ट आएगा। जब ट्रस्ट करना वो सीखेगा तो वो उसका एक नेचर बन जाएगा, और वो इमोशंस को सेफली हैंडल करना सीखेगा, और माइंडफुल कनेक्शंस उसके लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग में उसको सहायक होंगे। तो ये सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं, इसमें रिस्पॉन्ड करना है रेदर देन रिएक्ट। आप उसे रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट मत करिए। एंड ट्रस्ट इन चिल्ड्रंस इननेट कैपेसिटी इन ग्रो, और इस बात पर फोकस करिए कि उसकी जो इननेट कैपेसिटी है वो बढ़े। Mindful is not a technique for managing children. It is a way of being relationship with them. इसमें आप बच्चे को मैनेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसके साथ हो रहे हैं, रिलेशनशिप उससे डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए ये काफी आज के समय के हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग टेक्निक है। अब चैलेंजेस क्या है माइंडफुल पेरेंटिंग में? मैनेजिंग पेरेंटल स्ट्रेस, बैलेंसिंग डिसिप्लिन विद एम्पैथी, adjust parenting style as children mature, managing children screen time and AI use, maintaining consistency between caregivers, handling peer pressure and social media influences, and balancing work and family responsibilities. These are the challenges of mindful parenting across different developmental stages. Now, what is the basic psychological foundation of this mindful parenting? This is focus on, this comes from attachment theory. Responsive parent promotes secure attachment and emotional security. Social learning theory, where a child learns emotional regulation and behavior by observing parents. Emotional intelligence, parents help children recognize, understand, and regulate emotions. Mindful theory, present moment awareness, reduce impulsivity, reactions, and improve compassionate parenting. And fifth जो एरिया है डिसिप्लिन है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जहां पर बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स और एबिलिटी के अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है इसके। एंड प्रैक्टिकल माइंडफुल एक्टिविटीज फॉर फैमिली, इसको हम क्या कर सकते हैं? माइंडफुल पेरेंटिंग में हम क्या कर सकते हैं? डेली माइंडफुल ब्रीदिंग, किसी भी समय में जो हमें
ज्यादा अच्छा लगता हो या जो ज्यादा कंफर्टेबल हो। फैमिली ग्रेटिट्यूड शेयरिंग, एक दूसरे के प्रति आभार की इच्छा और वो होना चाहिए। इमोशन चेकिंग एट डिनर, जब आप शाम के समय ही ज्यादातर घरों में लोग एक साथ होते हैं, तो वहां पे इमोशंस को जरूर देखिए कि आज वो किस तरह का फील कर रहा है। माइंडफुल स्टोरी टेलिंग, नेचर वॉक विदाउट डिजिटल डिवाइस, मतलब जो वॉक होनी चाहिए वो बहुत से लोग कान में लगा कर ही कुछ सुनते जाते करते जाते हैं। डिजिटल डिवाइस के अलावा भी अगर आप करें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, सभी लोग मिलके योगा वगैरह करें तो अच्छा है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, एक दूसरे की बात सुनना, और कन्वर्सेशन के समय में ऐसा नहीं कि अपनी ही बात करना, दूसरे की नहीं सुनना। और टेक्नोलॉजी फ्री फैमिली टाइम होता है तो अच्छा रहता है। अब इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं, स्कूल काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं, फैमिली थेरेपी में यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में यूज कर सकते हैं, पेरेंटिंग वर्कशॉप में कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो mindful parenting is not a single technique, but a lifelong approach that evolves with a child's developmental stages. By remaining emotionally aware, empathetic, and responsive from infancy through emerging adult, parents can support healthy cognitive, emotional, social development. Adopting mindful parenting strategy to children's changing needs strengthen family relationship, promote resilience, and prepare child to thrive in an increasingly complex digital world. Mindful parenting जो है वो फोकस करती है मुख्य रूप से, इट इज नॉट अ परफेक्ट पेरेंटिंग बट प्रेजेंट इन वन। आप परफेक्ट पेरेंटिंग की श्रेणी में नहीं है, इट इज अबाउट बीइंग ए प्रेजेंट वन। आप उसके साथ में रह रहे हैं, हर समय हैं, तो इट मीन्स शोइंग अप फुल्ली इन द मोमेंट, attentive to your child emotional state, not judgmental about their, compassionate in your response. The quality of presence can be developed. And presence आप कैसे रह सकते हैं, रहना चाहिए? attentive awareness होनी चाहिए, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंपैशनेट कनेक्शन होना चाहिए। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अटेंटिव अवेयरनेस है, दूसरा नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस है, एंड थर्ड वन इज कंपैशनेट कनेक्शन। व्हेन चाइल्ड फील सीन, कि कोई उसे देख रहा है, उसका परवाह कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है। सेफ, सेफ क्या है? वो अपनी हर बात को बता रहा है तो वो जज नहीं किया जा रहा। एंड अंडरस्टैंड, लोग उसे समझ रहे हैं, उससे कंपैशनेट कनेक्शन कर रहे हैं। Then their nervous system regulate more easily and their capacity for learning, empathy and resilience expand naturally. तो उसमें क्या क्या आएगा? लर्निंग आएगी, एम्पैथी का एक बहुत मानवीय गुण है एम्पैथी, वो डेवलप होगा, और रिजिलियंस जो उसे हर प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, एक्सपेंड नेचुरली, ये स्वाभाविक रूप से उसमें इनकलकेट हो जाएगा। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ए हेल्दियर टुमारो। द बेनिफिट ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग एक्सटेंड फॉर beyond the individual family unit. When parents cultivate presence, emotional intelligence, and compassionate communication, the ripple effect are profound, touching children, communities, and ultimate society as a whole. By this, reduction in parental stress, stronger attachment security, and improve executive function. And which type of executive function develops? It improves including impulse control,
बच्चों का इम्पल्सिव बिहेवियर आजकल बहुत होता जा रहा है, तो इम्पल्स कंट्रोल होगा, वर्किंग मेमोरी अच्छी डेवलप होगी उनकी, एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी, जो कि आजकल रिजिडिटी में बढ़ती चली जा रही है। बच्चा जो कर रहा है वही करता रहता है अपने इंटरनेट यूजिंग के साथ में, और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी। इट इज ए की प्रिडिक्टर्स ऑफ लाइफ लॉन्ग सक्सेस, और इससे उसको लाइफ में हर एरिया में सक्सेस मिलेगी। तो स्ट्रॉन्गर मोर सिक्योर अटैचमेंट बॉन्ड, अब स्ट्रॉन्गर होंगे और सिक्योर अटैचमेंट बॉन्ड डेवलप होंगे पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में। दूसरी बात है एक कॉल टू एक्शन, आप उसे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे। चूज प्रेजेंस ओवर परफेक्शन, प्रेजेंस को आप चुनिए, उसके साथ आप जुड़िए, ना कि उसको परफेक्शन के लिए हर समय। बहुत से लोग, बहुत से पेरेंट्स होते हैं हर चीज परफेक्ट करने के लिए ज्यादा वो करते हैं, जिससे बच्चे कभी कभी इरिटेट होने लग जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग a parents can give a child is not a perfect life but a present one। आप उसके साथ हर समय उपस्थित हो, वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है कि एवरी पेरेंट wants their child to thrive not just academically but इमोशनली एंड सोशनली एंड रिलेशनली। जब पेरेंट्स चाहते तो ये है कि उनका बच्चा एकेडमिक ही नहीं, इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पर और रिलेशनल लेवल पर भी अच्छे से डेवलप हो। एंड इमोशन कोचिंग थ्रू माइंडफुल पेरेंटिंग deeply, it is a deep and human approach that transforms how we respond to our children emotional world, and in doing so shapes who they become। वो क्या बनना चाहते हैं उसको आपको शेपिंग करना है। तो माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं है, प्रेजेंट करने का है। और जब बच्चा इन चीजों को महसूस करता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होता है। तो इमोशन कोचिंग इज नॉट ए टेक्निक रिजर्व फॉर क्राइसिस मोमेंट, इट इज ए वे ऑफ बीइंग दैट कैन बी वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ एवरीडे family life। The most powerful emotion teaching happens not during planned conversation but in a small repeated interaction that makes up a typical day। By bringing intentionally to routine movement, parents can deepen connection and build emotional resilience incrementally. They can do it. Now, you are not just managing behavior in movement, you are shaping the architecture of your child's brain and laying the foundation for a lifetime of emotional health। It develops better self-regulation, strong relationship, fewer behavioral issues। बहुत behavioral issues नहीं होंगे अगर emotions properly handle करना उसे आ जाता है। The single most important thing you can do for your child is not to give them more opportunity, more school, or more activities. It is to be emotionally available and responsive to their inner world। Now, what is the role of mindful parenting in emotion coaching? Mindfulness helps parent pause before reacting। जब भी आप रिएक्ट करें तो उसके पहले थोड़ा रुक के सोचें जरूर, देखें जरूर, वॉच जरूर करें। नेक्स्ट है स्टे काम ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जब वो परेशान हो, तो उस समय आप शांत रहें। ऑब्जर्व इमोशन विदाउट जजमेंट। इमोशंस को ऑब्जर्व करिए, उसको जजमेंटल मत बनिए, उसको जज मत करिए। रिस्पॉन्ड विथ एम्पैथी इंस्टेड ऑफ एंगर। गुस्सा होने की बजाय एम्पैथी करने का प्रयास करें। मॉडल हेल्दी इमोशनल रेगुलेशन।
इमोशन रेगुलेशन का हेल्दी मॉडल यूज करिए। चिल्ड्रन लर्न इमोशनल रेगुलेशन बाय ऑब्जर्विंग हाउ पेरेंट्स मैनेज देयर ओन इमोशंस। बच्चे ये बताने से नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो उसी के अनुसार बच्चे भी उसी काम को करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है इसका बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलेगा। बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन इज दे विल डेवलप better emotional regulation, which is lacking nowadays, higher emotional intelligence, improved self-esteem, strong resilience, better communication skill, increased empathy, fewer behavioral problems, better academic adjustment, and a strong social relationship. If we use this technique, we will develop these human characteristics, which is very much important. And nowadays, these are lacking. So we can inculcate these things. And what will be the benefit for parents? Reduce parental stress, parenting stress, because it is natural approach. So parents का जो स्ट्रेस रहेगा वो कम रहेगा। इम्प्रूव्ड पेशेंस, दे कैन लिसन, better communication with children, increase confidence in parenting, strong emotional connection, greater self awareness। तो इस तरह से सेल्फ अवेयरनेस भी आएगी, इमोशनल कनेक्शन भी डेवलप होंगे, ये सारी चीजें, और जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। तो पेरेंट्स को ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल माइंडफुल इमोशन कोचिंग स्ट्रेटजीज जो हम यूज कर सकते हैं जनरल डे टू डे लाइफ में। प्रैक्टिस माइंडफुल ब्रीथिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग। जब भी कोई चीज रिस्पॉन्ड करें उसमें ब्रीदिंग से आप अपने को एक तरीके से फोकस कर पाते हैं। लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। जब भी कोई अपनी बात कह रहा है तो उसको इंटरप्ट मत करिए, बात उसको आप सुनिए ध्यान से। वैलिडेट चिल्ड्रंस फीलिंग्स। बच्चों की जो फीलिंग्स हैं उनको वैलिडेट करिए। इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस इमोशन थ्रू वर्ड्स। बच्चों को अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए इनकरेज करिए, वो अब शब्दों में बातों को बता सके। बहुत से लोग बता नहीं पाते, इसलिए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। कोई भी समस्या है उसके लिए पनिशमेंट मत दीजिए, उसको ये बताइए कि वो कैसे उसको हैंडल करेगा, ये जरूरी है। नेक्स्ट है मॉडल काम बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें कैसे शांत रहा जाए, कैसे अपने को मैनेज किया जाए, ये बताइए। क्रिएट रेगुलर फैमिली कन्वर्सेशन अबाउट इमोशंस। अपनी बातों को आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। अच्छे इमोशनल इन्वायरमेंट के लिए, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड सेल्फ कंपेशन टुगेदर। ग्रेटिट्यूड पे करना आना चाहिए और सेल्फ कंपेशन भी एक साथ होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस क्या है। अगर हम इसको करते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। मैनेजिंग पेरेंटल स्ट्रेस एंड फटीग, रिमेनिंग काम ड्यूरिंग चिल्ड्रन टेंट्रम, limit time for mindful practice, parents unresolved emotional experiences, cultural belief that discourage emotional expression। बहुत सारे ऐसे इमोशन होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए कल्चरल में बिलीफ है कि नहीं हमें व्यक्त करना, लेकिन उसके लिए भी आप उसको एनकरेज करिए, क्योंकि दीज आर द चैलेंजेस। एप्लीकेशन है पेरेंट एजुकेशन, इसको हम यूज करेंगे पेरेंटल एजुकेशन में, स्कूल और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, फैमिली काउंसलिंग में, चाइल्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज में, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में इसको यूज किया जाता है। नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर। इमोशन कोचिंग थ्रू माइंडफुल पेरेंटिंग helps children develops emotional intelligence,
resilience, and healthy coping skills while strengthening the parent-child relationship. Next point is by responding with awareness, empathy, and acceptance rather than criticism or punishment, parents create a safe emotional environment in which children can learn to understand and regulate their feelings. And last one is this approach support not only children's social and emotional development, but also parents' own emotional well-being, leading to healthier and more connected family relationship. Thank you very much. Thank you, Dr. Mishra. Any observation? Any comment? चलिए, हम डॉक्टर रश्मि मिश्रा ने बहुत ही अच्छे ढंग से पेरेंटिंग के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया। खास तौर से माइंडफुल पेरेंटिंग एक नई विधा मुझे नजर आई, उसका उन्होंने बड़ा ही विशद वर्णन किया। और हम समझते हैं कि अगर इन स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखकर बच्चों का पालन पोषण किया जाए तो उन्हें हम एक नए मॉडल में प्रस्तुत कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि पेरेंट्स भी इस पेरेंटिंग स्टाइल के साथ अवेयर हों और अपने बच्चों के लालन पालन में इन स्ट्रेटजीज का प्रयोग करें। मैं एक बार फिर डॉक्टर रश्मि मिश्रा को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जो पार्टिसिपेंट इसमें भाग लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मेरा अगला जो कार्यक्रम होगा वह अगस्त के महीने में सेकंड संडे को होगा। आपसे अनुरोध है कि थोड़ा समय निकाल करके जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं उनको सम्मान देने का कष्ट करें। ऐसे लेक्चर सुनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम लोग तो लेक्चर देते रहे हैं, अब बैठ करके सुनना एक बड़ा कठिन काम लगता है। फिर भी हम लोगों का दायित्व है कि इस चीज को आगे बढ़ाते रहें। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आशीष जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सारी सिस्टम को बहुत सही ढंग से, सही तरह से संचालित किया। क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर भी थे, हम जूम पर भी थे, इसलिए कहीं संख्या में कमी हो सकती है, लेकिन कौन कहाँ कितना है इसका पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जो हमारा दायित्व है प्रोफेसर सक्सेना के प्रति उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, वह कार्य हम करते रहेंगे, चाहे एक भी व्यक्ति क्यों न हो। अतः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स। Thank you.